अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत या हय्यु या क़य्यूम तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला। अल्लाहुम्मा या करीम अकरिमना बिनूरिल फ़हमी व अख़रिजना मिन ज़ुलुमातिल वहमी व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल-अदब al-Mufrad में से इजाज़त तलब करने, इजाज़त मांगने के सिलसिले में जो आपने रिवायत यहाँ पर नक़ल फ़रमाई, उसमें से चंद गुज़िश्ता दर्स में हमने पेश की थी। आज मज़ीद इसी मौजू के मुतालिक चंद अहादीस करीम आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब इज़ा दख़ल बैतन गैर मस्कून। ऐसे घर में दाखिल होना जिसमें कोई न रहता हो। अगर आप ऐसे घर में जाएं जहाँ पर कोई न रहता हो तो फिर क्या करना चाहिए? So when you enter a home which is uninhabited, there are no dwellers there, there is no one there who's staying, there is no one staying there, what should you do? Hadith number 1055. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني هشام بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إذا دخل البيت غير المسكون إذا دخلت البيت غير المسكون فليقل أو إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि जब कोई शख्स ऐसे घर में दाखिल हो जिसमें कोई न रहता हो तो उसको चाहिए कि ये कलिमात कहे, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। तो जाहिर सी बात है, रिजालुल गैब भी होते हैं, पाक जिन्नात भी होते हैं, तो इसलिए हम ये कहते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। So whenever you enter a home, Sayyidina Abdullah ibn Umar would say, whenever you enter a home which is uninhabited, there is no one living there, then say assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Peace be upon us and upon the righteous servants of Allah, because there are righteous jinn that inhabit good places. Obviously there is nothing to fear. We probably have some in the masjid as well, mashallah, alhamdulillah. Ho sakta hai, mashallah, too. Definitely, Haji Sahib, mashallah, will attest to that, mashallah. Malaika and the angels, the righteous servants of Allah, the angels and the Rijalul Ghaib as well, men of the unseen, that help us. As in the hadith of the Prophet ﷺ, whenever you are lost in a desert or in a forest somewhere, or you've lost your way, say, A'inuni ya ibadullah. O servants of Allah, yani Rijalul Ghaib, the awliya, help me, assist me. And there is another narration that the Prophet ﷺ says, whenever you enter a home which is uninhabited, there is no one there, say as-salat, send salawat upon the Prophet ﷺ. Say as-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. Imam Al-Qadiri rahimahullah mentions this in Sharh al-Shifa. He says, because the ruh, the soul of the Prophet ﷺ, the tajalli, the manifestation of the soul of the Prophet ﷺ is in the home of every single true believer. Subhan. So say salam upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. حدثنا إسحاق قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أجمعين قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها واستثنى من ذلك فقال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि सूरह नूर की ये आयत करीमा जिसको हमने तिलावत की, जिसका तर्जुमा ये कि अपने घर के सिवा किसी घर में दाखिल न हो जब तक कि इजाज़त न ले लो और वहाँ रहने वालों को सलाम करो। इस आयत में से ये हुक्म मुस्तस्ना, ये आयत
ये जो बाद में आने वाली आयत, ये मुस्तस्ना है, एक्सेप्शन है कि तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अगर तुम ऐसे घर में दाखिल हो जाओ जिसमें कोई नहीं रहता और उस घर में तुम्हारा सामान है, और अल्लाह ताला जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो. So Sayyidina Abdullah bin Abbas radiallahu ta'ala mentions that this verse in Surah An-Nur, in which Allah says, لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله. Do not enter a home other than yours, someone else's home, without seeking prior permission and without conveying the greetings of peace to them, without making salam to them. However, the exception is what? Which Allah mentions later on. However, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ. There is no harm upon you. You will incur no harm to enter a home in which no one lives, which is uninhabited, in which you have your own a property inside, you have your goods inside, you have your food or whatever you have stored. Warehouses, you know, obviously with our sales, we must be storing our tomato tins and elephant at other places, mashallah. So if you got these goods in these places which are not inhabited by people, you are allowed to enter them. But Allah also mentions, وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. Allah knows very well whatever you make manifest and whatever you hide. Allah knows about the intentions. باب ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم غلاموں کو اندر آنے کی اجازت لینی چاہیے. So the servants should seek permission to enter. Even if you have servants, then they should seek permission to enter, to come to you. حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا يحيى بن اليمان عن شيبان عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال هي للرجال دون النساء. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سورہ نور کی اس آیت یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے غلاموں کو بھی اندر آنے کی اجازت طلب کرنی چاہیے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حکم مردوں کے لیے یعنی مرد غلاموں کے لیے ہے، باندیوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ باندی کا حکم ایک طرح سے بیوی کے لیے، لیکن یہ سارے احکامات ظاہر سے باتیں پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے. Now obviously we don't see slavery has been abolished. But surprisingly, last week on the news or the week before, they actually pulled a lorry to the side on a very busy motorway, and that lorry had 15, 16 slaves, and he enslaved people who were trafficked into this country. And this is happening illegally. But the Sayyidina Abdullah ibn Umar says that if you have slaves, then the male slaves, the slaves should seek permission. Should seek permission. Apologies. As for the maid servants, the female maid servants, they are not in need of doing so, because obviously the ahkamat of them in terms of jurisprudence are slightly different. Some are regarded as one's own wife, not in all aspects obviously, but these ahkamat that are mentioned in the books of fiqh. باب قول الله بلغ الأطفال منكم الحلم. The statement of Allah subhanahu wa ta'ala that when children reach adolescence, then they should also seek permission to enter, even in the home. So they are already at home and you are in a different room, we as parents are in a different room, then children who have reached adolescence must knock on the door, seek permission or notify their parents that they want to come inside. This is very, very important. Yes, by conveying the salam, obviously, ideally, yes. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن مجمعين أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله فلم يدخل عليه إلا بإذن. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے اس لڑکے کو علیحدہ کر دیتے تھے جو بالغ ہو جاتا تھا اور اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہوتا تھا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, he would allow his children to stay with him in his room or to sleep, for example, in the same room, but as soon as they became adolescent, he would withdraw them, he would separate them, and no one would enter, none of his children who had reached puberty or adolescence would enter in his room or enter where he was without seeking prior permission.
Babu yasta'dhin. Now the question arises, if we are going to our own home where our parents are and other people, other family members are, do we still seek permission? Which brings us to the next couple of ahadith. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bab yasta'dhinu ala ummihi. Apni maa se bhi andar aane ki ijazat talab karni chahiye. We should also seek permission from our mother to enter. Yani we should also notify the family members when we enter the home that we are coming in. We do not want to see, because obviously उमूमन ऐसा होता है कि घर में बेतकल्लुफ़ी होती है और गैर ज़रूरी कपड़े निकाल देते हैं, और कोई किसी भी हालत में हम होते हैं, क्योंकि उसमें चार दीवारियाँ होती हैं, हम होते हैं, अपने घर वाले होते हैं, तो बेतकल्लुफ़ी होते हैं. तो हो सकता है कि कोई आने वाला घर का ही फ़र्द हो, लेकिन आप उस हालत में अपने वालिदैन को देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए पहले से इजाज़त तलब कर लेनी चाहिए. या तो कम से कम अगर सलाम नहीं कर रहे हैं आप, तो खास कर बता दें, आप उनको खबरदार कर दें कि आप आ चुके हैं. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إلى عبد الله قال أستأذن على أمي فقال ما على كل أحيانه تحب أن تراها. सैयदना अलक़मा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि एक आदमी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्हु के पास आया और उनसे पूछा, क्या मैं अपनी वालिदा के पास जाने की भी इजाज़त तलब करूं? अगर वो एक कमरे में है तो क्या मैं उनसे भी इजाज़त तलब करूं जाने के लिए, उनके पास जाने के लिए? उन्होंने फरमाया कि तुम हर वक्त उसे देखना पसंद नहीं कर सकते. यानी मुमकिन है कि वो गैर ज़रूरी कपड़े उतारे हुए बैठी हो, तो अगर बग़ैर इजाज़त के आप अगर अंदर जाएंगे तो यानी ये आप पसंद नहीं करेंगे. So someone asked Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala, should we also seek permission from our mother if we want to enter into the room where she is? He replied, of course we should, because you would not want to see her at all times. There are certain times where she may shed the extra additional non-essential clothing, and you don't want to see her at that moment in time. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت مسلم بن نذير يقول سأل رجل حذيفة رضي الله تعالى عنه فقال أستأذن على أمي فقال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. Similar hadith, someone asked Hudhayfah ibn al-Yaman radiallahu ta'ala, should I seek permission from my mother to enter? Should I seek permission from her? He replied, of course you should, because if you don't, then you will see that which you will dislike. Okay, so this is obviously common sense, that when children or when whoever enters, they should seek permission, they should notify the people in the family. It is also sunnah to loudly say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to the people of the house. There is also another wazifa that you can do when you do salam, when you enter the home, say Assalamu alaikum wa rahmatullah to the people in the house, to the inhabitants of the house. And also then salawat upon the Prophet ﷺ and read Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, one time. Inshallah, through the barakah of this, Allah subhanahu will give you immense rizq. There will be barakah, blessings in your rizq, inshallah, agar aap aisa karenge, inshallah. Babu yasta'dhinu ala abi. अपने बाप से इजाज़त लेना. और बाप कैसी तरबियत फरमाते हैं माशाल्लाह. आज तो हम तरबियत का हाल हमने देखा है माशाल्लाह, क्या तरबियत हम करते हैं. سبحان الله. حدثنا فروة قال حدثنا القاسم بن مالك عن ليث عن عبيد الله عن موسى بن طلحة قال دخلت مع أبي على أمي فدخل فاتبعته فالتفت فدفع في صدري حتى أقعدني على إستي ثم قال أتدخل بغير إذن. हज़रत मूसा बिन तलहा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं अपने वालिद के साथ जा रहा था, उनके पीछे पीछे जा रहा था कि उनके साथ मैं अपनी वालिदा के पास चला जाऊं, क्योंकि मेरे वालिद भी अपने वालिदा के पास जा रहे हैं. तो वो मुझसे पहले अंदर चले गए कमरे में, पीछे से मैं चला गया. तो वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और मेरे सीने पर ऐसा मारा कि मुझे अपने सुरीन के बल बिठा दिया, यानी मैं गिर पड़ा. ये है तरबियत. और कहा कि क्या तू बग़ैर इजाज़त के दाखिल होता है? यानी अब तेरे लिए इजाज़त नहीं है कि जब शौहर अपनी बीवी के पास जाए, हालांकि ये तेरी वालिद है लेकिन मेरा ताल्लुक़ तो बतौर बीवी के हैं, तो जब शौहर अपनी बीवी के पास चला गया तो बाहर से आने वाले बेटे को इजाज़त तलब करना लाजिम था, अगरचे ज़रा देर पहले ही वो अपने बाप से जुदा हुआ था. So Sayyidina Musa ibn Talha mentions that I was walking with my father, walking behind my father, and he was going to my mother, obviously his wife. And so I thought that I'll enter in the same room with my father, behind my father. And then he turned towards me. So I entered the room and he turned towards me and he pushed me. He pushed me with such force that he fell back on my backside. I literally fell on the floor.
And he said, will you enter this room without permission? And you shouldn't enter without permission. You must seek permission. When the husband goes to the wife, yani parents, when the mother goes to the father, father goes to the mother, then the children must make sure that they notify their parents. They must seek prior permission. Because we all know, subhanallah. Because both of them are on the phones nowadays. Babu yasta'dhinu ala abihi wa waladihi. Apne baap aur bete se ijazat talab karna, seeking permission, asking permission to go into one's father or one's child, or to meet one's son, one's child. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال رضي الله تعالى عنه يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوزا وأخيه وأخته وأبيه. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आदमी को अपने बेटे, अपनी वालिदा से अंदर आने की इजाज़त लेनी चाहिए, अगरचे उसकी वालिदा बूढ़ी हो, और इसी तरह अपने भाई, अपनी बहन, अपने बाप से भी इजाज़त लेनी चाहिए कि मैं अंदर आ जाऊँ. So seeking permission, one should seek permission. St. Jabir mentions that a person should seek permission from his own child to enter, from his mother, even if she's old, he should ask permission, seek permission from her, and likewise from his brother, from his sister, from his father, one should seek permission. Yani, am I allowed to enter? Babu yasta'dhinu ala ukhtihi, seeking permission from one's sister to enter. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو حدثنا عمرو وابن جريج عن عطاء قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أجمعين فقلت أستأذن على أختي فقال نعم فأعدت فقلت أختان في حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهما أستأذن عليهما قال نعم أتحب أن تراهم عريانتين ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم قال فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات 3 قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم قال ابن عباس فالإذن واجب زاد ابن جريج على الناس كلهم. So Sayyidina Ata बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से पूछा, I asked Sayyidina Abdullah bin Abbas रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, should I seek permission from my sister to enter? So he said yes. So I repeated the question. मैंने फिर सवाल दोहराया, क्या मैं अपनी बहन से इजाज़त लूँ? उन्होंने कहा हाँ. फिर मैंने अर्ज़ किया कि मेरी 2 बहनें, I have 2 sisters, जिनकी मैं परवरिश करता हूँ, उनके ऊपर माल खर्च करता हूँ. I nurture them, I provide for them, I spend on them. The 2 sisters live with me. Do I still seek permission from them? The 3rd time when he asked this question, and Sayyidina Abdullah bin Abbas says, أَتُحِبُّ أَن تَرَاهُمَا عُرْيَانَتَيْن, do you wish to see them naked? Obviously not. So obviously it implies that you seek permission. And then he recited this ayat, the ayat unun tilawat farmai, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, O you who believe, those who are enslaved, those amongst you, those who are your slaves, they should seek permission from you, and those of your children who have not yet reached the age of puberty, have not yet reached adolescence, should also seek permission from you, especially 3 times. Which were the 3 times we mentioned last week? Min qabli salatil fajr, before the salatul fajr, before the morning prayer. وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ, and at noon when you take off the non-essential clothes to have midday siesta, for example. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ, and after the night prayer, after Salatul Isha. ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ, these are the 3 times of awra, 3 times of privacy, 3 times in which a person is very, obviously he likes to seclude himself and he may shed the non-essential clothing, so therefore it's very important for them to seek permission, especially in these 3 times. But then Allah says, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمْ, as for your children who reach the age of puberty, तुम्हारे जो बच्चे बालिग हो जाए, فَلْيَسْتَأْذِنُوا, तो हर वक्त तुमसे इजाज़त तलब करें. كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, जैसा कि उनसे पहले भी लोग इजाज़त तलब करते थे. So those children amongst you who have reached the age of puberty, who are adolescent now, who are adults now, they should always, unrestricted and at all times and conditions, should seek permission to enter, just as those before them sought permission. So Sayyidina Abdullah ibn Abbas says, فَالْإِذْنُ وَاجِبٌ, here seeking permission is necessary, compulsory.
Ibn Jurayj says, "Ala nasi kullihim," from all types of people or on all types of people. It is an obligatory obligation on all types of people to seek permission to enter. باب يستأذن على أخيه अपने भाई से अंदर आने की इजाज़त तलब करना, seeking permission from one's brother. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن أشعث عن كردوس عن عبد الله قال يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته. Hazrat Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu, similar hadith, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu says one should seek permission from his father, from his mother, from his brother, from his sister, from all of them. Bab al-istidhan thalathan, you should seek permission 3 times. 3 दफ़ा आप इजाज़त तलब कर सकते हैं. बाज़ लोग तो माशाल्लाह दरवाज़ा इतना खटखटाते हैं कि 3 नहीं 30 दफ़ा ये शायद, यानी हम तो दरवाज़ा तोड़ के ही रहेंगे आज इंशाअल्लाह. यानी इंशाअल्लाह यानी अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए. यानी some people, they don't knock on the door, they bang on the door. Yeah, take the door off the hinges. Let's raise the door to the ground. Allahu Akbar. और बैल भी इतनी बजाते, बाज़ लोग तो बैल इतनी दबाते हैं कि बस टीट वो बजती ही रहती है. Subhanallah. So 3 times ijazah. Obviously this will refer to verbal ijazah, but also ringing. You ring once, they don't come out. Ring twice, they don't come out. Ring thrice, then leave if they don't come out. Okay, not that bell nahi chal rahi hai, all these options hai. Shayad bell nahi, ring nahi chal rahi hai, chalo aur zyada dabate hain, chalo window pe knock karte hain, chalo pebbles lagate hain. We used to throw pebbles. Let's throw a daffodil inside the letterbox, maybe someone will come out. Allahu Akbar. तो 3 बार इजाज़त तलब करना है. हद्दतना सहाबा किराम किस तरीके से इस पर अमल, दिस इज हदीस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस शरीफ है. सहाबा किराम किस तरीके से अमल करते थे, सुभान अल्लाह. हद्दतना मुहम्मद इब्न सलाम قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا. فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له. قيل قد رجع فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك. فقال تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد. قال عمر أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى التجارة. ये हदीस शरीफ बाद में भी आएगी, ये क़द्र इख्तिसार के साथ यहाँ पर जिक्र की जाती है कि सैयदना अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हु, अबू मूसा इनकी कुनियत थी, इनका नाम था हज़रत अब्दुल्लाह बिन क़ैस. वो एक दफ़ा हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु से अंदर आने की इजाज़त आपने मांगी उनके पास जाने के लिए. तो हज़रत उमर ने इजाज़त नहीं दी क्योंकि हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु मशगूल थे, किसी काम में लगे हुए थे. तो सैयदना अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हु वापस तशरीफ़ ले गए. जब हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु काम से फारिग हुए तो फरमाया कि क्या मैंने अब्दुल्ला बिन कैस की आवाज़ नहीं सुनी, यानी मैंने ज़रूर उनकी आवाज़ सुनी थी, तो उनको इजाज़त दो अंदर आने के लिए क्योंकि मैं अब काम से फारिग हो चुका हूँ. तो कुछ खादिमीन ने कहा कि हज़रत वो तो वापस तशरीफ़ ले गए. तो हज़रत उमर ने उनको बुलवाया, तो वो तशरीफ़ लाए, हज़रत अबू मूसा अशअरी आए. तो हज़रत उमर ने वजह पूछी कि आप वापस क्यों चले गए. तो आपने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये हुक्म दिया गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम सिर्फ 3 दफ़ा इजाज़त ले, जब तीसरी दफ़ा इजाज़त न मिले तो हम पत्थर फेंके नहीं, वापस चले जाए. सुभान अल्लाह. यानी इजाज़त लेने में इसरार न करें उसके बाद. तो हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क्योंकि ये बड़े मुहतात थे, हम तो आजकल व्हाट्सएप जो भी हदीस शरीफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, whoever prays 2 rakats in the last Jummah of Ramadan, all of his qaza has been forgiven. Wala hawla wala quwwata illa billah. You forward it, hadith sharif, subhanallah, forward it, even without checking on and confirming. Hazrat Umar radiallahu was very circumspect in this matter. He said, ta'ti ala dhalika bil bayyinah, you must bring a witness to this. Subhanallah, ये एहतियात देखें इनका, so cautious. तो वो गए हज़रत मूसा अशअरी अंसार की मजलिस में, कहा कि किसी ने क्या ये हदीस शरीफ सुने हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. तो उन्होंने कहा हम में से किसी ने नहीं सुने. हाँ, हम में से जो सबसे छोटी उम्र के हैं हज़रत अबू सईद खुद, उन्होंने ज़रूर ये हदीस शरीफ सुनी होगी. तो उनसे पूछे, तो उन्होंने सुनी थी हदीस शरीफ.
तो ये तशरीफ़ ले गए हज़रत उमर रज़ी के पास। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने जब ये हदीस शरीफ सुनी तो अफसोस करते हुए ये फरमाया कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म मुझ पर पोशीदा रहा। अल्लाह अकबर, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कि हदीस मुझसे पोशीदा रही। क्योंकि ये इसलिए पोशीदा रही क्योंकि मैं बाज़ारों में कारोबार करने में मशगूल रहता था, यानी तिजारत किया करता था, और इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस पाक में हाज़िरी कम हुआ करती थी, इसलिए अहादीस करीमा इतनी ज़्यादा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुनी। So just to briefly summarize this in English, Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari goes to Sayyidina Umar ibn Khattab to seek permission to enter. He was engaged, Sayyidina Umar was engaged in a task. He was doing something, he was preoccupied, so he wasn't given permission. So Abu Musa al-Ash'ari leaves. Sayyidina Umar radiallahu anhu, after he finishes his work and task, when he becomes free, he says to himself, didn't I hear the voice of Abdullah bin Qais? Bring him in and allow him to enter. So they said that he's already left. So he sends for him, he summons him, and then he says, why did you leave? He said, because I heard the Messenger sallallahu alaihi wasallam, we were commanded by the Prophet sallallahu alaihi wasallam that we are only allowed to seek permission thrice. If we are not granted permission to enter after the third time, we must leave. So I left. So he said, you must bring a witness to this, a proof, someone who can corroborate your statement, someone who can bear witness to what you say, that this is the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he went to the group of the Ansar and he said, who amongst you will bear witness to this? They said, no one amongst us will be able to do so except the youngest amongst us, which is Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu. So he went alongside with him and he bore witness. So Sayyidina Umar says, as a way of regret and remorse, alas, how could a hadith of the Prophet ﷺ be concealed from me? A hadith of the Prophet ﷺ has been concealed from me, has been hidden from me. And I was not aware of this hadith of the Prophet ﷺ. And the reason is, he says, Al-Hani as-Safqu bil-Aswaq. I was distracted because of being occupied in selling my goods in the marketplace, and he was busy in trading. This is why in the hadith, if you read Usul al-Hadith, you will find that none of the Khulafa al-Rashidun were the greatest narrators of the hadith, because they were already preoccupied. And alhamdulillah, they were given the greatest maqam anyway. Even if they were physically away from the suhbah of the Prophet, they were still receiving great spiritual grace from the Prophet ﷺ, greater than any other companion. Al-Khulafa al-Rashidun majma'in. They were preoccupied with other things. They were businessmen and so forth. As opposed to the Ashab al-Suffa, the people of the veranda. Sayyidina Abu Hurairah mentions this. I narrate them, people lay accusations on me that why do I narrate the most hadith in comparison to other great companions. The reason is, they were earning a livelihood. They used to go out to the marketplace. They used to go out of Al-Madinah Al-Munawwara. They were preoccupied with all of these tasks, which made them, which didn't allow them to spend more time in the company of the Prophet ﷺ. But I used to be from the Ashab al-Suffah, the people of the Randa. My eating and my drinking and my sleeping was with the Prophet ﷺ. I used to be with him 24/7, which is why he narrated the most ahadith. So he mentions this, inshallah. I will finish with this hadith, inshallah. Sallallahu ala nabiyil ummi wa alihi, sallallahu alayhi wa sallam, salatu wa salamun alayki ya sayyidi ya habibi rasulullah. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا